I'm currently the CTO and Chief Financial Officer of Genetics Research, which Dr. Aaron already mentioned. It's the company that created the Bridix uh, breast cancer vaccine. So starting with you, what makes this vaccine unique compared to existing treatment for the breast cancer? So you, sir, answer. Well, I think it's a unique treatment in a sense that because we are eradicating the chemotherapy, immunotherapy, hormone therapy, whatever therapies are there in the country at the moment. So let's say that hormone therapy, targeted therapies, we are just eradicating with a single dose of the vaccine. So vaccine is basically is going to be increasing the immune response for the body in such a sense that you don't have to go for like very expensive high rated treatments. You can just have a single dosage of a vaccine to treat your disease. So it's a precaution and a cure both at the same time, which is like beautifully created in the laboratories with the help of Dr. Alex software, because we studied a lot of oncogenes and cancer cells in the body, and we identified that it can be treated very easily just with a single dose of the vaccine, like how COVID vaccine came in the India, how diabetes vaccine today launched in the India. So that's the same concept. It is eradicating all the treatment pathways just for a single dosage of the vaccine for the all the stages of cancer, stage 0 to the stage 4. All stages are being cleared with this type of things. Breast cancer, and also for curing the breast cancer is on the same scale of percentage. Are there any side effects of or risk associated with the vaccine? Well, I would say there is no side effects because I personally have tested all the things, and I did a successful animal trials with the help of Dr. Rios in the NHS UK. That's one of the largest government bodies for the hospitals. And I think that currently when we're doing a phase 1 and phase 2 clinical trial testing, there was still no side effects would be found as other treatments have it. So my vaccine that we created is zero side effects, which we claim about that and which we have tested report about that thing. In the UK currently is a phase 3 going on the very critical ICU patients at the moment, and I think that hopefully it will be passing the same stages as phase 1 phase 2 is doing. So there is no, it's a zero side effect vaccine because working for the immune response. अरुण जी बीइंग इंडियन Yeah. इंडियन को आपने कुछ फीचर्स किया आपने देखा है उनको महिला को कहीं पे जैसे आपने टेस्ट पहले कुछ हाँ जी। वैक्सीन बनाने से पहले कहीं पे करना पड़ता था इंडियन को कुछ क्या हाँ जी, जो मेरी जो वैक्सीन बनी है वो सब सारी की सारी महिला को देख के बनी है। हमने एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को टारगेट नहीं करा। हम लोगों ने सारे के सारे जितनी भी पॉपुलेशन आती है वुमेंस की, सारे के सेवन के 7 कॉन्टिनेंट्स में हमने उसको टारगेट करके वैक्सीन बनाई है। तो आई थिंक ये एक यूके रिस्पॉन्स पे नहीं जाती, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड जा रही है। तो हर वुमेन के जेनेटिक्स अलग होते हैं, तो हम लोगों को उसको टारगेट करके वैक्सीन अपनी वाले बनाई है। तो जिस और ऐसा नहीं है कि वुमेन्स में ब्रेस्ट कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर इज ऑल्सो इन मेन्स। So yeah, in USA, 500 men each year gets breast cancer. So it's very prominent because hormone सेम ही है बॉडी के अंदर। तो हम लोगों ने दोनों को टारगेट करके बनाएंगे, बट अभी सिर्फ लॉन्च सिर्फ विमेंस के लिए हो रही है। मेंस के लिए आई थिंक नेक्स्ट ईयर हम कुछ करेंगे उनके लिए भी फिर, इस बिकॉज आई थिंक यहाँ पे केसेस थोड़े सिवियर चले जाते हैं, ट्रीटमेंट थोड़ा सा महंगा हो जाता है। तो हम यही चाहते थे कि इंडिया में जब हम लॉन्च करें तो वो जीरो इफेक्टिव कॉस्ट पे लॉन्च हो, जिससे सारे वीमेंस को सब कुछ मिले, उनको प्रिकॉशन भी, इंजेक्शन भी मिले साथ साथ में, पर उनको उसकी सेल्फ अवेयरनेस भी हो जो हॉस्पिटल्स नहीं कर पाते। तो हमारा वही सारा था, उसके ऊपर हमने सोचा था कैंपेन में चलाने के लिए। फिर बात आए प्राइस की हाँ जी। हमारे यहाँ पे कहीं कहीं पोर भी है तो प्राइस देखिए, मेरा मानना ये है कि मैं अपनी वैक्सीन बना करके गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी आगे कि उसको उनको कितने पे देना। मेरा यही होगा कि सबको फ्री में मिले जितना हो सके। मेरा यही है कि सबको फ्री में मिले, गवर्नमेंट डिसाइड करे, रिसर्च अपने कैंपेन्स वो प्रोवाइड करें, एंड आगे के आगे जितने एनजीओज हैं, जितने सेमी गवर्नमेंटल हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सबको वो फ्री में लॉन्च करे। मेरा आइडिया यही है। क्या बात है मैं कोशिश यही करूँगा कि आगे गवर्नमेंट को भी पिच हो सके, बट देखते हैं क्या करती है गवर्नमेंट फिर आगे। इंडियन में कहीं जैसे इंडिया लॉन्च करने से पहले आपको कई चीजें करनी पड़ती है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूरे हुए या आपके सब कुछ पूरा हुआ है। आई हैव FDA licenses, I have coffee press from Mexico, I have MHRA, I've already applied for DCGI जो ट्रक कंट्रोलर इंडिया के हैं। तो मेरा ऑलरेडी फेजेस क्लियर हो चुकी हैं, I'm just awaiting for my license confirmation। जैसे वो आ जाएगी इंडिया मार्केट में भी लॉन्च होना शुरू हो जाएगा। So I already have an order from Indian hospitals, I'm just awaiting the confirmation from the DCGI to get me the license after that। And how unique this is as compared to other vaccine or something in the market? Like how unique your product is like? Well, I think this is a something simple, like you guys came here for getting to know and awareness about the breast cancer। So आपके सामने अभी तक कोई प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च हुआ नहीं जो कैंसर की वैक्सीन बना रहा हो। बनाते हैं कंपनीज, पर 50% 40% तक का रेशियो रहता है, और हमारी कंपनी कह रही है कि हम 90% से ऊपर के हम टारगेट करा सकते हैं, हम उसको थेरेपी दे रहे हैं। एक या दो चीज़ें हो जाती हैं जिसमें हम अपनी कमी पेशी पूरी करने की कोशिश करने पर लगे हुए हैं, बट ये वैक्सीन इतनी यूनिक इस वे में है क्योंकि ये
बॉडी को ही टारगेट करके उसको कैरी खुद सेल्फ अपना रेप्लिकेट करके उसको ख़त्म कर सके डिजीज़ को, जो बाकी वैक्सीन नहीं करती हैं। बाकी वैक्सीन का काम है एक प्रिकॉशन देना, हम तो क्योर भी दे रहे हैं साथ में वैक्सीन को, तो थोड़ा इसमें डिफरेंस आ जाता है. So it's a precaution and a cure in a different sense. It's a very beautiful piece of a vaccine which has been targeting all the different treatments which we can know, which we already know about the research type of things. So 8 target is in single dose. And stage by stage dosage अलग हो जाती हैं. जैसे stage 1 में you have only 1 dose. Stage 2 1 dose. Stage 3 and 4 depends upon the how critical the patient is. बिकॉज रिपीट चांसेस भी आ जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर में. ऐसा नहीं कि कैंसर एक बार हो गया आपने कीमो करा लिया तो दोबारा नहीं हो सकता है, बट उसका कितना हो सकता है, कितने चांसेस हैं, हम अपनी वैक्सीन से उसको क्योर करने की कोशिश करते हैं. What is the role of AI in this vaccination? Well, the role of AI, it's quite actually, I could say it's a little bit simple, but it's actually not that simple. We involve AI in all the whole process or the research or how like certain compounds of interactions with mRNAs and microRNAs interacts in the body. So using this data that is available right now in the world, because we're living in an era where data is being gathered for every patient, like in the genes and genomes, we use this data to train like these novel models that are out there for the AI, like these things like large language models, which is something like ChatGPT uses. There are some other like convolutional neural networks that are very well known in the research field to help in studying the background of the biology of the data. So combining these old technologies, we will be able to like we have been able to create this vaccine in the whole process of the research of it, how it's impacting the body, how certain genetic systems have been impacted. We can like predict all the previous work for the that it's been made from the vaccine right before it and then tested directly in the lab. So AI has been heavily used for the development of this first vaccine. And right now we're at such a point that we have created this protocol of mixing of AI and biology together that now we can repurpose all the AI background that we have developed for the whole process and target for different other diseases. So it's been like a very crucial thing because in the past, as you might know, it's been doing like try and error. Now we can do it also trial and error, but it's been done by a machine. So it make the process like way shorter. And living in this era where data is getting in very heavily, then we can actually move forward and developing the things way more faster, which this is what happened with the breast cancer vaccine that we have currently at the moment. We heavily use all the data that Dr. Aaron produced in the labs, data that is available out there for each country, and this enables us to use AI in a very crucial way for the development of this. I would like to add something on this. Like, as he's being little humble here, I think when we started the production for this, when we thought about that we're going to be doing a breast cancer vaccine for the whole world here, so we used to like ask for the tissue samples, which is very important to start the research about it because there are already a lot of papers published by USA, UK, New Zealand. There are a lot of heavy good scientists about that. But we researched 15,000 genes, 45,000 proteins. Each sample is different. So and his software, his AI analysis helped me to understand the dynamics of the human body to make it in the laboratory purposes, because I have to replicate the same things in my laboratory also to publish out a good product for the market. So I would say all credit goes to him for the AI analysis because it was only he and me together to start something in the initial basis of that. Today we have a big team of the scientists working on different protocols and different products also, but initially studying 15,000 genes, doing everything manually by hand, it's very difficult task. 45,000 proteins and what is happening and what the genetic functions will be, बहुत डिफिकल्ट होता है. तो आई थिंक इसका सॉफ्टवेयर उस काम में इसलिए आ रहा है क्योंकि वो हमें एनालाइज करने भी हेल्प कर रहा है, बट हमें आगे भी बता रहा है कि वो टारगेट एग्जैक्टली ब्रेस्ट पे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. आपने वैक्सीन तो लगा ली, आपको क्या पता वो एक्चुअली ऑर्गन पे जा रही कि नहीं जा रही है, वो कहाँ जा रही है हमें पता ही नहीं है. इसके सॉफ्टवेयर से एटलीस्ट पता तो चल रहा है कि एग्जैक्टली कहाँ जा रही है, प्रोटीन पे टारगेट हो रहा है. और 7 दिन के बाद, जब वैक्सीन लगने के 7 दिन के बाद आपको तो दोबारा हॉस्पिटल विजिट करना पड़ेगा. आपको पता लगना शुरू हो गया स्टेजेस कितनी क्लियर हो रही है, कितनी आसानी से प्रोटीन्स उसके बन रहे हैं और सेल्स कितनी जल्दी, कैंसर वाले सेल्स कितनी जल्दी मर रहे हैं, ट्यूमर ग्रोथ कितनी खत्म हो रही है. इसके सॉफ्टवेयर ने मुझे ये स्टेप में बहुत हेल्प करा था जब मैं ऑफिशियली वो काम कर रहा था. अभी भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है. आई थिंक प्रॉपरली वो लॉन्च हो जाएगा
22 जुलाई, क्योंकि पेटेंट्स हमारे पास हैं, ट्रेडमार्क्स हमारे पास हैं, गवर्नमेंट ऑलरेडी अप्रूव कर चुकी है, बट हमारी तरफ से हम चाहते हैं कि मतलब पेशेंट्स को कोई दिक्कत ना आए, तो जितना हो सके परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर हम. And what about when an individual having not a breast cancer disease or something like that, commoners can get that vaccine? Of course, it's like for everyone, all the women I would say has to get a breast cancer vaccine. It should be necessary for them. I think there was a vaccine for HPV also. Like a lot of women were taking HPV vaccine in a certain. We want the same thing, that all the women should have a precaution for breast cancer. You never know, or I never know when other person can have it. I have some diseases in my family also for breast cancer, so that's also very like a reliable situation that I want that all the ladies in my house and also other ladies should be safe for that, because like I don't know if you visited cancer hospital wings or not. It's very difficult to see a women sitting on a bed, dead bed, and said, ask